suit on these pitches. These are slow, low pitches in Lahore, especially now in Lahore. You might not see those big hits and through the line hits like Zazazai type players. You might not see them successful here in Lahore. So probably that is the reason they're trying to get that combination right. They're trying for combination as openers. They tried Haider Ali, Kamran Akmal. They're not getting it right, and probably it's about time in the tournament that Peshawar Zalmi should get their 11 right now. Definitely, they really need to do that. And again, another question: why Multan Sultans are so far best in PSL 7? And this is from Najib Maqsood Basir. Najib, just one line answer. The reason is Mohammad Rizwan and nothing else. I think he's the one who's doing it for Multan Sultan. He's bringing in so much positivity that everyone, he's inspiring other players around him, and everyone is performing. So I'll give it to Rizwan definitely. Yeah, we really have to give it to Rizwan for that. Another question: what are the reasons of failures of top order of Peshawar Zalmi by Mujahid Khan Gujar? Well, Gujarji, the first reason probably is that they're not letting people settle. These are difficult conditions for international players. It's not easy playing in Karachi or Lahore where the pitches are different. So you got to let people settle in. Tom Kohler, we were talking about, they didn't let him settle also, just one odd inning and they dropped him. They brought in Kamran Akmal, they tried Zazai also. So there are problems. Probably Wahab Riaz needs to think on his captaincy and let the team settle. That's probably why my suggestion would be to Peshawar Zalmi. Of course, there was a change of venue, but no change in performance. So Subhanallah asks, पाकिस्तान सुपर लीग इस सीजन में नया टैलेंट कौन-कौन से खिलाड़ी हैं जो उनकी कारकर्दगी से आप मुतासिर हुए? तो थोड़ा सा आई थिंक सबसे पहले तो पेशावर ज़ल्मी के सलमान इरशाद हैं। मुझे लगता है कि वो प्रॉब्ली बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, अपना टैलेंट प्रूव कर रहे हैं। ज़मान खान लाहौर कलंदर से आई थिंक ये दो प्लेयर्स होंगे जिनके ऊपर हमें देखना होगा कि ये की प्लेयर्स हो सकते हैं जो हमें इस PSL से हम डेवलप करेंगे, क्योंकि दोनों स्लिंगी एक्शन है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा एक्स फैक्टर है दोनों प्लेयर्स के बारे में। तो आई एम रियली होपफुल कि हमें इस PSL से ये दो प्लेयर्स थोड़ा ग्रूम होकर नजर आएंगे। Let's hope for lots and lots of new emerging players like Dhani आए हैं, शादाब ने कितना जो है आई थिंक वो तो थोड़ा इम्प्रूव सेटल्ड है। प्रॉब्लम नए टैलेंट की अगर हम बात करें तो जो बिल्कुल पहली बार सामने आए हैं वो इन दोनों को मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन दोनों के लिए। डेफिनेटली जमान खान वी बीन सीइंग कि कितना अच्छा सारे न्यू इमर्जिंग प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं सो कमिंग बैक टू शान मसूद उनका नाम जो है टेस्ट स्क्वाड में भी अनाउंस हो गया व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज कमिंग अप I think that is the best thing that has happened to Pakistan for a long time now in cricket. If you talk about such a huge side coming, and for once they've not thought about dropping players or players taking rest or playing players going to other leagues and playing there, preferring not preferring coming to Pakistan. I think that is a very good sign, and the credit must be given to I think solely to Ramiz Raja Bhai. I think the way he led the case, the way he fought the case after England and New Zealand denied their toes. I think credit must be given to him. He didn't bow down. He just gave them the attack. All of the nation was on attack, so they had to do it. When you look at PSL, they're like 30 odd players coming from England. Who would have thought that England would send all these players to Pakistan? This is all because the Ramiz Bhai has fought this case beautifully, and now we got getting the reward. So credit must be given to him. there's no doubt about that of course the way he has led Pakistan cricket it is commendable so really looking forward to the Pakistan versus Australia test सीरीज बिकॉज अगर हमने देखा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को आईपीएल के लिए भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया बिकॉज दे हैड टू बी हियर फॉर देयर नेशनल ड्यूटी सो आई थिंक दैट्स अगेन समथिंग वेरी कमेंडेबल coming back to PSL and coming back to the openers of Peshawar Zalmi because venue change हो गया and people were thinking they were anticipating कि आज कुछ maybe different देखे लेकिन different कुछ नहीं देखा they were all just the same एब्सोल्युटली देखिए बहुत जल्दी टीम्स को सीखना होगा कि अब ये कराची वाली पिचेस नहीं है, ये लाहौर की पिचेस हैं, ये डिफरेंट है। आप मुल्तान सुल्तान से कंपेयर ना करें, वो एज अ यूनिट एज अ टीम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इसलिए उनको शायद इतना पिच से फर्क ना पड़े क्योंकि रिजवान इतनी अच्छी फॉर्म है, शान मसूद बहुत अच्छी फॉर्म है, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट टीम्स वर स्ट्रगलिंग, टीम लाइक पेशावर ज़ालमी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की हम बात कर लें या इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी इवन, क्योंकि वो भी एक पावर हाउस है। इन सारी टीम्स को बहुत जल्दी एडजस्ट करना होगा लाहौर के पिचेस पे, क्योंकि ये थोड़ा लो पिचेस है, थोड़ी स्लो पिचेस है। यहाँ पे आपने देखा टर्न भी हो रहा है तो बहुत स्लो टर्न हो रहा है। इट्स नॉट इजी टू गेट इट अवे, नॉट इजी टू गेट विकेट्स आल्सो। सो अब यहाँ पे बहुत टेक्निकली आपको करेक्ट बैटर्स चाहिए होंगे और अच्छे अच्छे स्पिनर्स चाहिए जो स्लो बॉल करें।
आपने देखा शायद आज उस्मान कादिर को भी नहीं खिलाया गया क्योंकि वो भी थोड़ा तेज बॉल करते हैं। एंड सेम गोज विद इमरान ताहिर भी उतने सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि वो भी थोड़ा तेज स्पिन करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोबेबली आपको लाहौर के पिचेस के ऊपर ऐसे स्पिनर्स चाहिए होंगे जो थोड़ा स्लो बॉल करें, जैसे लिविंगस्टन आज कर रहे थे, थोड़ा स्लो ब्रेक कर रहे थे वो, और उनको वो सक्सेसफुल भी हुए। तो प्रोबेबली मुझे लगता है कि टीम्स को अपने कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज करने होंगे। ये कराची के पिचेस नहीं है, यहाँ पे थ्रू द लाइन हिट नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा वर्क करना होगा, अपने टेक्निकल स्किल पे दिखाने होंगे, तभी आपको बड़े हिट मिलेंगे। सो जो टीम जितनी जल्दी एडजस्ट कर लेगी आई थिंक उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि अभी लास्ट आप एंड की तरफ जा रहे होंगे, तो यहाँ पे आप हारना अफोर्ड नहीं करेंगी टीम्स। सो इट्स बेटर टू गेट इट अप, रैप इट अप क्विकली, जितनी भी जल्दी हो सके। Right, talking about Peshawar's Zalmi's bowling, they seemed quite in control. Wahab Riaz took his first wicket today in the HPL PSL 7. तो उन्होंने भी 2 wickets लिए. आपने लिविंगस्टन की बात की, उनका पहला मैच था. He was also not bad. So they seemed quite in control when they were bowling. But what really happened when they came to bat? Look, then again, हमने अभी बात भी की है. They're not letting them settle. That's what I see the problem is. They're changing too much in their combinations. They're not letting Heather Ali settle at one point number. They're not letting the opener settle. The only player who seems settled is Shoaib Malik, and we know all what Shoaib Malik is capable of. You can play him anywhere; he'll get settled within no time. So that's the problem. I mean, the captaincy of Wahab has been on the lower side, in my opinion. I think he's not been up to the mark since, because he's not performing himself. And at this time of career where he's desperate to perform, he's not performing. So that will affect his captaincy and his decisions, and then the performance of the team naturally. Yeah, because okay, we have another question, and this from Sajida Khan. How do you see the inspiring cricket in PSL? What will be the impact of the cricket on national T20 Test matches team and ODI team of Pakistan? Look, impact, जिस तरह की हम the way this PSL is happening, I think you look around any league of the world, I think this is the best cricket that we have seen in terms of just the cricket I'm talking about. I'm not talking about the other things, the sponsors and everything, purely cricket. If you talk about, this is the league that provides you the best cricket. Even everybody all around the world, people have accepted this. That is the quality that we bring in. So there is nothing else that we're giving you the best bowlers. The youngsters are getting exposure from PSL. They're playing like I was looking at that inning of Ehsan Ali and Jason Roy, who was playing with, and Jin wins to play at number 3. I mean, look at that opportunity that Ehsan Ali is getting, playing right in between two of the greatest players of this format. So that is what this PSL is all about. It's all about giving the exposure to our youngsters, and they are getting it. Look at Zaman Khan; he's one of the top bowlers, youngsters, and he's not letting people pick him. So that's what we're gonna get. There will be effect. You got to just be patient. We're seeing lots and lots of young players this PSL. And another question, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम. मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपका कैप्टन परफॉर्मेंस ना दे, उसको रेस्ट कराना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए? हो सकता है, बट दैट डिपेंड्स कि कैप्टन आपका कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है टीम में. जैसे बाबर आजम है कैप्टन है, इफ इज नॉट परफॉर्मिंग यू कैन नॉट ड्रॉप अ बिग कैप्टन लाइक हिम, बिकॉज ही इज सच अ मैच विनर. आप ऐसे प्लेयर को नहीं ड्रॉप कर सकते. बट यस, अगर आपके पास उस लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है और वो इतना इफेक्टिव प्लेयर नहीं है, तो देयर इज नो हार्म क्या कैप्टन एक आधा मैच मिस कर दे, कॉम्बिनेशन को नया खिलाए, और किस्मत बदल जाती है नए लोगों के आने से, काफी चीजें होती हैं. तो यस, आई एग्री कि हो सकता है ऐसे. Because, and we have seen it in the past कि captains change हुए हैं between the PSL also. But talking about all the teams, let's have a look at the points table. And here it is. Multan Sultan 6 on 6, bang on with 12 points. Islamabad United just a little behind with 6 points, and they've won 3 matches. Lahore Qalandar again with 3 matches and 6 points. Then Quetta Gladiators, 2 wins, and they had a really good win. Their last win in Karachi, Jason Roy took them home, and they got 4 points there. Peshawar Zalmi could not chase today, and they lost. And again, we see that they're on 4, and Karachi Kings, a very big disappointment here. So they have none on the charts yet. And this was the points table brought to you by Brighto Sports. The table, Karachi Kings with Yeah. none on the chart, that is something very disappointing. But आज के match में भी देखें, Peshawar Zalmi were not able to convince us much. What would you like to say about their openers, Kamran, Akmal, Heather? They couldn't perform today.
I know that is such a big problem for Peshawar Zalmi. If you talk about the openers only, Kamran Akmal, he's probably towards the end of his career. He's not moving as he used to move. He's not young anymore. He's 39, 40, probably getting there. He's not that 100% fit. Also, he's not agile that he'll be driving around. So that is a problem. He might score one odd match, but consistency will be problem because of the fitness definitely. And talking about Heather Ali, I mean, he's been there. He's shown potential. He's shown so much of talent, but consistency is not there. That is the problem. You got to be consistent at this level. You're getting an opportunity. You're the main opener for such a big franchise, and you got to be consistent. It's not that you're just going to perform after 3 or 4 innings. You just come up and hit one big inning. That's not going to happen. If you need to make it big in international cricket, you've got to be consistent, and that is what Heather Ali has to learn to be consistent. And that is all. That is the problem for Peshawar Zalmi. What do you think about, okay, we have a question, I'll ask the question after this. मेरा सवाल ये है कि पीएसएल से हमें अच्छे ऑलराउंडर क्यों नहीं मिल रहे देखिए, ये सबसे पहले तो ये पीएसएल की जिम्मेदारी नहीं है, वो आपको दे देते हैं अच्छे प्लेयर, ये उनकी मेहरबानी है। बट ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है ऑलराउंडर्स और क्रिकेटर्स ढूंढना। आई थिंक अपॉर्चुनिटी जैसे जैसे जो भी अच्छा आता जाएगा सामने, अब तो इतनी अपॉर्चुनिटी है लोगों को अपना टैलेंट दिखाने की कि अब तो अगर कोई अच्छा ऑलराउंडर है तो वो छुप ही नहीं सकता है। अगर आप अच्छे हैं तो आप इतना आपको एक्सपोजर मिलता है, इतने पीडीपीज हैं, आपने प्रोग्राम्स देखे, इस्लामाबाद यूनाइटेड समटाइम्स, कराची किंग्स करता है, कोयटा भी करते हैं। तो अब तो अगर कोई अच्छा ऑलराउंडर होगा तो वो तो आ ही जाएगा। इट्स जस्ट कि आपकी फैक्ट्री उस तरह के ऑलराउंडर्स प्रोड्यूस नहीं कर रही है जिसकी हमें आदत है। प्रॉब्ली अजहर महमूद एंड अब्दुल रजाक टाइप प्लेयर्स, या मोहम्मद हफीज के लेवल के प्लेयर, लाला के लेवल के प्लेयर, तो उस तरह के प्रोड्यूस शायद नहीं हो रहे हैं। तो बट स्टिल आई एम वेरी होपफुल। हुसैन तलत ने पोटेंशियल दिखाया एज एन ऑलराउंडर, बट स्टिल नॉट दैट के हम उसको कहेंगे वो इंटरनेशनल मटेरियल है। स्टिल ही नीड्स टू वर्क ऑन दोस एबिलिटीज। आई थिंक हमने शादाब खान को एज एन ऑलराउंडर इस पीएसएल में वापस ले लिया, तो इससे बड़ी बात और हमारे लिए क्या होगी। बिल्कुल। एंड ऑल्सो खुशदिल शाह वो पार्ट टाइम बॉलर कहलाते थे, बट लुक एट एब्सोल्युटली, हिम दिस पीएसएल, he's been एब्सोल्युटली। आई थिंक देन brilliant. अगेन वही रिजवान ही शोड ट्रस्ट इन हिम। कैप्टन का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। जब कैप्टन आप पे ट्रस्ट शो करता है, एक एवरेज प्लेयर भी अपने से बेहतर परफॉर्मेंस देता है। और यही आई थिंक खुशदिल शाह के साथ रिजवान भी कर रहे हैं कि he's given him the responsibility and he's delivering. Definitely he is delivering. Okay, another question from Subhanallah. इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जमान खान की आखिरी और ओवर के बारे में क्या ख्याल है? मोहम्मद हसनैन के बारे में बताओ, दोबारा कम बैक करेंगे? देखिए, आई थिंक इसीलिए मैंने शायद जमान खान की बात की थी कि मेरे लिए प्रॉब्ली द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट वो शायद जमान खान और इरशाद में यही दो होंगे, बिकॉज ऑफ द वे ही इज बोल्ड। जो प्रेजेंस ऑफ माइंड उसने दिखाया है, क्योंकि तेज बॉल करवा लेना इज वन आर्ट, बट बॉल को कंट्रोल करना, अच्छे एरियाज में बॉल करना, इवन स्लोअर वन भी करना है, अच्छा लेंथ पे बॉल करना, दूर बॉल उसने किए। उसने उसने ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही उसके हवास बाख्ता हो गया तो उसको समझ नहीं आती। ही शोड कंपोजर। तो यही वजह थी कि वो सक्सेसफुल है इस लेवल पे आके। उसने दूर बॉल किया, उसने आपने चेंज ऑफ पेस किए, कटर्स मारे, तो उसने दिखाया कि उसके उसके सिर्फ पेस नहीं है, दिमाग भी है उसके पास। सो आई थिंक बहुत अच्छा क्रेडिट है। दूसरा क्वेश्चन मुझे हसनैन के बारे में उन्होंने शायद पूछा हसन। था। प्रॉब्ली ही विल मेक अ कमबैक जी। बहुत थोड़ी बहुत आई थिंक पीट शायद उसकी तो हो जाएगी उसके एक्शन के अंदर। बट वील हैव टू वेट कि क्या वो इतनी ही पेस से एक्शन चेंज के साथ आएंगे। दैट विल बी अ वरी, या जिस पे मैं देख रहा हूँ। बट एट द मोमेंट अब इट लुक्स फाइन। अब कुछ थोड़ा चेंज होगा तो आ जाएंगे वो। राइट। आज ओके, अनदर क्वेश्चन, क्या टॉस अहम रोल प्ले करेगा लाहौर लैंड में? यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देखिए, आज हमने देखा कि इतनी इतनी ड्यू हमें देखने को मिली नहीं है। बट स्टिल मुझे लगा आगे अब देखेंगे आगे जाके क्या होगा, कि उस तरीके से ड्यू का क्या फैक्टर होगा लाहौर के इस मौसम के अंदर। बट स्टिल यहाँ पे स्लो लो पिचेस है लाहौर के अंदर। यहाँ पे पहले बैटिंग करना भी शायद ज्यादा आपके फायदे में रह सकता है, क्योंकि आप रन कर सकते हैं, नए बॉल से तो आप रन कर सकते हैं। बट अभी पहला मैच हमने देखा है, चेज नहीं कर सकी टीम पेशावर जल्मी की साइड। तो मुझे लगा कि पिच में उतने उस तरह के रन नहीं, कि जैसे हमने कराची में देखा कि 200 रन हुए, वो 200 चेज भी हो गए, या ऑन एवरेज 180 190 रन बनते रहे। ऐसा शायद लाहौर में हमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे स्लो लो पिचेस होंगी, उस तरीके से बड़े हिट भी शायद नहीं देखने को मिलेंगे। तो हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्रिकेट अच्छी हो सकती है इवन लो स्कोरिंग गेम्स में बट आज द वेदर वाज 14 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हिच मींस भी। इट वाज कोल्ड, और उसकी वजह से हमें देखे कि कैचेस भी कुछ ड्रॉप हुए हैं। सो डू यू थिंक द वेदर हैड एन इम्पैक्ट ऑन दैट? लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं सारे। मुझे नहीं लगता कि इतना हमने देखा कराची लेक में भी बहुत सारे कैचेस हमने छूटते हुए हमें नजर आए। फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स थोड़े बेहतर हो सकते थे। ना सिर्फ लोकल प्लेयर्स, हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी देखा कि उनसे भी बहुत आसान आसान
कैचेस भी छूट गए, उनके टांगों के दरमियान से चौके भी हमें देखने को नजर आए। तो वो प्रॉब्ली अभी कंडीशन से थोड़ा एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे भी लाइट थोड़ा डिफरेंट है कराची से, लाहौर के मैचेस, लाहौर के स्टेडियम में, कजामी स्टेडियम में। तो शायद एक एक मैच लगे, बट फिर जैसे मैंने आगे कहा कि जितना जल्दी हो सके एडजस्ट करना होगा कंडीशंस में, क्योंकि वक्त आगे से 3 3 4 4 मैचेस हैं इसके बाद, तो एक एक मैच ही लें एडजस्ट होने के लिए। बिल्कुल। Now, Ali, if you can choose the best question in सारे questions में से। आई थिंक जमान खान वाला क्वेश्चन वाज द बेस्ट, जो उन्होंने पूछा कि आखिरी ओवर में उन्होंने ऐसा क्या डिफरेंट किया, बिकॉज इट वाज एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ही वांटेड टू नो, ही वाज ईगर कि वो क्या डिफरेंट कर रहे थे बाकी बॉलर्स से। तो आई थिंक आई विल गो विद दैट। Right. So the one who asked about Zaman Khan, hum aapka question, your question, Ali likes your question the most. So you are the winner. Congratulations. Please send us in your details on our Facebook page and we'll get your prize to you. So now coming on to tomorrow's match, Ali, it's Lahore Qalandars versus Multan Sultans. What are your predictions? I'm really looking forward to it. I think बहुत अच्छा मैच होने वाला है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की सेटल साइड को अगर कोई टक्कर दे सकती है जिसकी बॉलिंग, तो वो लाहौर कलंदर्स की है। आई थिंक इन स्लो लो पिचेस के ऊपर उनकी जितनी पेस है, जैसे हारिस रऊफ है, जमान की हमने बात की, शाहीन शाह अफरीदी तो है ही है, नेशनली राशिद खान, उनके वो जो बॉलिंग है बहुत अच्छी है। और इन पिचेस के ऊपर अगर वो थोड़ा सा सेंसिबली बॉल करेंगे, क्योंकि तेज पेस तो है इनके पास, अगर आप थोड़ा कटर्स यूज करेंगे, थोड़ा वेरिएशन लाएंगे, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरीज आएंगी, जब स्लो बाउंसर्स आएंगे, जब डिफरेंट वेरिएशंस आएंगी, तो ही आपका सर्वाइवल होगा। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस गेम। मुझे लगता है बहुत अच्छा मैच है, बट स्टिल मेरी जो फेवरेट टीम वैसे एनीवेज लाहौर कलंदर्स, आई थिंक दे शुड विन इट, and not just this match, but they should be able to win the tournament also. This is what I'm Let's hoping. see. Yeah. Let's hope and let's see if they're able to win tomorrow's match. And of course, then the Yeah. whole tournament, it's their home ground tomorrow, Yeah. their first matches. So the hopes are very, very high. Definitely. Thank you so Definitely. much for your You're predictions and welcome. thank you so much for being on the show with us, Ali. No problem. Anytime. Thank you so much for having me. Thank you. So that was Ali Yunus with us, and he predicted that Lahore Qalandars is going to win tomorrow. I will go with Multan Sultans because again they had a convincing win today. And of course, if you can tell us your predictions and you can participate in the competition going over our social media platform. If you're watching the match, take a picture and send it to us or upload it on Instagram, Facebook using the hashtag Brighto Digital Fan, and then you can feature on the show and also you can predict and win. So if you're watching all of these matches throughout the HPL PSL 2022, we're giving the fans a chance to win exciting gifts and prizes by predicting and winning. Of course, predict who's going to win tomorrow. Write in the comments, send us your messages, and then you can be a part of the show. You can win lots and lots of gifts and lots of hampers also. Of course, like आज हमने आपके questions लिए, we take them in every episode. So send in all your questions related to HBL PSL 7, and our experts, our guests, everybody is going to answer those questions for you. Also, if you have any feedback, anything, we're always here to listen to those. So you can win so much. We're offering so much to you, and we're bringing cricket to you each and every day through Brighto Sports. So I have chosen my team. It's Multan Sultan. It's time for you to predict your team, and then of course win if your team wins. Let's see who wins tomorrow. It's Multan Sultans, and if Lahore Qalandars can give Multan Sultans a run for their money, they can be the team to make Multan Sultans lose, because Multan Sultans have won 6 out of 6. But Lahore Qalandars would be playing on their home ground in front of their home crowd tomorrow. So let's see what really happens. I'll see you right after the match around 11:30 p.m. So do not forget to tune in. But until then, take care and Allah Hafiz.